Hello students, good morning all of you and welcome back our online class Maths 6th standard. Students, today we are going to continue our first chapter, that is knowing our numbers. In previous video already you have learned about that Indian place value chart. In Indian place value chart divided into 4 periods, or it has 4 periods, okay, that is ones, thousands, lakhs and crores, which one already have studied with that in the previous video. But students, today we are going to discuss about that what is the face value and what is the place value. Do you know the students, in face value in previous classes, I mean 5th standard, already you have studied face value and a place value. Just will remind once, recall back it, what is the face value. Face value of a number or a digit. When you are finding that face value, you should ignore about the place where it is. Just you identify what its number or what its digit. Okay, that is called as a face value. And what is that place value? You have to multiply the face value into multiply with the face value with the its place value. In the place chart, what is that is there? Which position it is there? Where it is there? In which period or which place it is there? That value with multiply with the face value, then we can get that place value. ठीक है, जो हमें प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसका जो डिजिट को मल्टीप्लाई करना है उसका प्लेस वैल्यू में कौन सा पोजीशन पे है, उसका प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस में कौन सा प्लेस में है, उसको मल्टीप्लाई करके तो उसको प्लेस वैल्यू निकल जाएगा. ठीक है बेटे, हमको अभी विल गो थॉरली what about that face value and what is the place value in this video. So let us start that about that. First of all, what is the face value? The face value of a digit is the number or a symbol it represents irrespective of its position in the numeral. That means क्या है, जो face value है, जो digit का जो face value क्या है ना, उसका जो रिप्रेजेंट जो सिंबलिकली रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं वही है फेस वैल्यू. मतलब 3 का फेस वैल्यू क्या है, बोले 3 है. कौन सा प्लेस में रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं होता, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं होगा, तो उसका फेस वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज द सेम, दैट इज इट्स सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन. एग्जांपल हम देखेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट इजीली. द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द 3,76,451. देखो बेटे, ये जो एक न्यूमेरिकल दिया हो, ये नंबर पे 3,76,451. सो इसका फेस वैल्यू 5 का फेस वैल्यू क्या है, और एक नंबर का 58,738, इसका फेस वैल्यू क्या है, 5 का फेस वैल्यू क्या है, दोनों का सेम है. नंबर कौन सा प्लेस में, ये 5 अभी 10th प्लेस में है, ये 5 10,000 का प्लेस में है, फिर भी उसका फेस वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि 5 का फेस वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट 5. कौन सा प्लेस में रहेगा तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसका जो सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन वही है फेस वैल्यू. 3 का फेस वैल्यू क्या है, 3 ओनली. कौन सा प्लेस रहेगा उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. ठीक है, वी कैनॉट चेंज, वी कैनॉट फाइंड आउट दैट डिफरेंस इफ द डिजिट विल बी डिफरेंट प्लेसेस इज देयर. The face value always constant, that it's a symbol. Okay, now we can understand students place value. The place value of a digit in a number is its face value multiplied by its position value in the place value chart. Suppose friends 3,85,183. ठीक है, हम क्या बोले, इसका फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर पे फेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 का जो सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन वही है फेस वैल्यू. बट व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, सॉरी, फेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इन नंबर पे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा ना, हमको 5 लिखना है, इसका 5 का प्लेस वैल्यू पूछ रहे, 5 इनटू कौन सा प्लेस में है, वो जो 5 कौन सा प्लेस में है उसका प्लेस वैल्यू निकालना पड़ता. तो ये कौन सा प्लेस में, 1000 में है. 1 उसको हम क्या लिखते हैं, 1000 का पीरियड है वो, तो ये जो है 1000 का प्लेस में है. ठीक है, ये 10,000 का प्लेस है, ये 1000 का, ये 1000 पीरियड है, 1000 एंड 10,000. सो 1000 प्लेस में है तो इनटू 1000, तो इक्वल कितना होगा 5000.
So place value of 5 in this number is 5000. ठीक है, सपोज में ये नंबर पे बोलेंगे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 सो इक्वल क्या होगा 1 into क्योंकि उसका प्लेस वैल्यू ऑफ 1 into कौन सा प्लेस में है 100 प्लेस में, सो 100. सपोज मैं और एक बोलेंगे 3, ओके इधर 2 3 है याद रखो. सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 2 3s are there, so what you have that the first 3, this is the first 3, so what you can say 3 into 1 place में है, so 1 is equal to 3 and second 3 into what is the place value, now this is the lakh 1 lakh, so 1 lakh is equal to 3 lakh. So place value of 3 in the first cases, the first in this cases first 3 is there, that is the 3 because one place. When the place value of the second 3, that is the 3 lakh. Okay, because the second last 3 is in the lakh places is there, so 3 into what 1 lakh. Okay students, I hope you have understand about that what is that place value and what is the face value. Just we will go for that some examples more again. So look at here students, some example I have given that here the notes you should observe. The place value of a digit depends on its position in the number. मतलब जो फेस वैल्यू कुछ चेंज नहीं होता, उसका जो फेस है जो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है वही है फेस वैल्यू, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन. हम क्या लेंगे सपोज 7381, ठीक है, तो इफ आई विल से 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, सो क्या होगा प्लेस वैल्यू ऑफ 3 मतलब 3 कौन सा पोजीशन पे है, कौन सा प्लेस में है उसका डिपेंड करता है. ठीक है, वो जब 100 प्लेस में है तो 3 into 100 is equal to 300, लेकिन उसका व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3 is equal to 3 only because it is a symbolical what is that only, it is a face value same but place value what is its position. Did you understand about that students, what is the face value and place value? Okay, so next here example I have written the place value of 5 in this number. So look at here, the number is 6538. It is Indian system because the after 3 digit after only one is there, so according to that we can identify 5 into 100 because 5 is in 100 place. Whenever you are just you have to remind that friends, when you are finding the place value at that time the digits in position, where is the position, where in which place it is placed, that you have to find out. Now 5 is placed at 100 place it is there, so 5 into 100, so 500. ठीक है, this about that what is that the place value and a face value. So next one more example already I have written friends. We have to see here the place value of 5 in this. Here I have place value, sorry place value we have found 500 because it is 5 is on in 100 place. Here another one also I have to find out the 5 where it is this number 9,85,381. So in this what is the place value of 5? So you should find out that position of the 5. Now position of 5 is in 1000 place. Yes, where it is in 1000 place because this is 100, this is 1000. So 5 into 1000 is equal to 5000. So place value of 5 is what? 5000. So students, homework for you also I will give here. First find the place value of 7 in
2,87,384. Place value of 7 in this. Find the face value of 7 in 1,87,121. Okay, find the face value of 7 in this, and what is that place value of 7 in this. So you have to solve this problem and send me in my WhatsApp number. Thank you all of you. Have a nice day. Next video we have to learn that about that what is that international place value chart. Thank you.